तो मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सोनम महाजन साहिबा। सोनम सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। Hey, thank you so much for having me. थैंक यू। शो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने एक नया इंग्लिश चैनल शुरू किया है, द न्यू वर्ड विद डॉक्टर चीमा। प्लीज़ उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड आई एम श्योर सोनम महाजन भी कहेंगी कि आप उसको सब्सक्राइब करें। सोनम आज आपसे हमने बात करनी है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। ये एक बात चल पड़ी है कि इंडिया जो है अब वो जिसे कहते हैं ना एक वेस्ट एशियन क्वाड में चला गया। वेस्ट एशियन मीन्स कि मिडल ईस्ट में चला गया है। एक अब वो जो जिसे आप कह लें कि ये यूएई हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, ये जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे इंडिया ने अपनी प्रेज़ेंस जो है वो बढ़ानी शुरू कर दी है। आप क्या समझती हैं दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी की वज़ह से हो रहा है या क्या आप समझ रहे हैं कि ये जो अमेरिका है वो चाइना की वजह से इनसिक्योर है तो हो रहा है या क्या समझ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या इंडियन पार की वजह से हो रहा है सो हाउ डू यू असेस दिस इंडियाज access into the Middle East or into the West Asia? Oh, well, I think it's an amalgamation of all of these factors. Certainly, the leadership matters, but in India, it's widely believed and also said uh, that the foreign policy here doesn't really change overnight with a new government coming to existence. So it's like I said, it's an amalgamation of multiple factors. US has its own interests. India has its own interests. There are bilateral interests here, then there are strategic interests, and there are also like broader regional interests. America certainly is or may be approaching this second quad, as it is said, Quad 2.0, from the perspective of from the Chinese lens, because what had started to happen in the recent past is that the US primarily was focusing on Indo Pacific, and that kind of left a certain vacuum for the Chinese in the West Asia. I mean, if you look at most West Asian countries, they are traditionally the US allies. And in the recent times, 40% of China's crude imports, if you see, they are from West Asia. So the US certainly did see a vacuum there and felt that it needs to kind of again bring some attention to West Asia also, and to refill that vacuum that it ended up creating. On the other hand, India, we have great ties with Israel. We are आप हिंदी sorry. में भी बात कर सकती हैं बिकॉज वो फिर ये है कि बहुत सारे लोग दिस इज नॉट कम्प्लीटली इंग्लिश लेकिन ये है कि मैं बस अब जस्ट आपको ये कहना चाह रहा था कि हिंदी इंग्लिश मिक्स कर लें लेकिन ये है कि You can put this on your English thing, right? वो भी कर लेंगे लेकिन ये है कि मैं चाह रहा Okay. था कि जरा यस Okay. So, all right. So I'll try to mix because the momentum just got broken. So India traditionally, आपको पता है, it's an ally of Israel, and there is no rocket science in understanding कि India and US की जो ties है lately that have also got strengthened, and we are looking at widening those ties, right? So, America is a friend of India, Israel is a friend of India. Then we share a great relationship with UAE also when it comes to uh, having a huge number of Indians in the Middle East and West Asia. Plus, apart from that, we also have economic cooperation. So I think if you look at the broader situation, US के अपने interest हैं, Israel के अपने interest हैं, India के अपने interest हैं, but I think more or less India is kind of having a win-win situation here, more than everybody else. So if you like, I can touch upon that as to how it works for us. So yeah, I mean, if you want me to speak on it, I can यस speak on. प्लीज गो अहेड फ्लोर इज योर्स बोले बोले Okay. So as far as my understanding goes, I think
एक तो हमारा बहुत बड़ा रीज़न ये है कि millions of Indians are living in these Gulf nations, right? Yeah. So we also get remittances from there. Plus, just like Pakistan relies a lot on GCC countries or OIC world, the Muslim Ummah, for its Kashmir cause. Similarly, India also feels there is a growing need in the recent times where cooperation from, especially from countries which are seen as the custodians of the Muslim Ummah, and especially the significant Islamic nations, we have been able to build better ties with them. Uh, and that is how we secured huge investment in Jammu and Kashmir from the UAE recently. तो ऑफ कोर्स एक वो भी इंटरेस्ट है हमारा कि ऑन द कश्मीर इशू it really helps us internationally on a global stage when the Muslim significant Muslim countries are by our side. And I'm always a votary of the fact that when you're when you have economic cooperation, there are very less chances of you getting into confrontation because your interests are tied. So it really matters when you have a great economic relationship with another country. When your interests get tied, and more or less you have to come on the same page on every issue. Yeah, and India has also been kind of promoting this idea of Israel getting wider acceptance for a while now. So I think this also helps Israel in a big way because they have not been having that kind of acceptance, and the Muslim world primarily has been projecting it as a pariah state. So I think Israel gets wider acceptance with this move. And I think somehow America is also, I don't see many analysts making a notice of this. Maybe some have had, but then I've not come across many. I think the US here also is kind of trying to make a statement because अमेरिका पर बार बार ये इल्ज़ाम लगते हैं कि आपका जो भी इंटरेस्ट है इंडिया में इट्स थ्रू अ चाइनीज लेंस एंड you're only looking at the east of India because you have your own interest there. Otherwise मतलब इंडिया और जो यूएस की जो रिलेशनशिप है it is very superficial. This is widely said, especially in the circles which are लिटिल हॉस्टाइल टू इंडिया कि यार ये इनका जो रिलेशन है ये सस्टेनेबल नहीं है, एंड इट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन अ म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ containing China. I think with this move, the US has also kind of communicated that we are committed to basically looking after the Indian interests beyond Indo-Pacific, because this is going to bring food security on a large scale to the whole of South Asia, apart from benefiting the member nations. So it has implications for like good implications for the region as well as for the larger good of the world. So the United States of America also seems to be making that statement to India to kind of which kind of helps that situation for us where we have some degree of mistrust for each other because the US has been a long-term ally of Pakistan, and their interests were tied for a long time. So I think this taking steps in this direction also kind of uh, nurture the relationship between the two countries. I mean, India and the US. सोनम, आपने काफी डिटेल में बात की और आपने ये कहा कि इजराइल की जो एक्सेप्टेंस है टू सम एक्सटेंट इन मिडल ईस्ट, इसमें इंडिया का भी पुश है, ठीक है। तो आप क्या समझती हैं कि बेसिकली आपकी नज़र में क्या मोटिव्स हैं कि अगर लेट्स से या आपका व्हाट इज अ पॉसिबल इंडियन इंटरेस्ट, इंडिया का क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि इजराइल जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड में उसकी रिकग्निशन हो। वन के जो है वो जितना ज़्यादा अरब वर्ल्ड इजराइल को रिकग्नाइज करेगी, अरब वर्ल्ड फ़लस्तीन के इशू से पीछे हटेगी, तो टेक्निकली कश्मीर के इशू से भी पीछे हटेगी। तो आपके क्या आप किस लेंस से इसको देखते हैं कि जब इंडिया जो है वो चाहता है कि इजराइल जो है वो मिडल ईस्ट में रिकग्नाइज हो या उसको मेन स्ट्रीम किया जाए
along with the US. आप इसको कैसे देखेंगे, जरा ये काइंडली हमें elaborate करें. Is this extension of its interest for Kashmir, or it's purely economic है, या और इसमें reasons है? आप इसको कैसे देखेंगे? Well, coming from an academic point of view, I think your point is a little misplaced here because if you talk of the Kashmir angle, uh, India has had a soft corner towards Palestine forever. Because it makes India's case on Kashmir stronger. Okay, the world does not look at Kashmir today from the Pakistani point of view, but we do want a wider acceptance for Israel for multiple reasons. I don't think Kashmir really figures in that. Multiple reasons are, one is like huge Indian diaspora lives in the Arab world, in the Gulf region, and peace in that region, on as a whole, really works for India. We are always a country which has been speaking of peace everywhere, and we do not want any conflicts around us. So one is that it complements India's vision to play a global role, plus also be a force that wants or desires peace everywhere. Uh, Secondly, I also feel that these this notion also works for India because recently we've seen that the Arab world, the Muslim world primarily, it is also getting divided, on ideological lines and so many other factors. You look at the Muslim world, Turkey has a line of its own. Uh, it seems to be basically going in the wrong direction lately. They are talking about resurrection of Ottoman Empire and having that Muslim dominance all over again. On the other hand, we see the UAE, we see Qatar, we see Saudi Arabia. So they are rather trying to diversify. If you look at the UAE, it's like the trading hub in the Middle East. So they are also kind of trying to understand and capitalize on the fact that the oil wells can dry up really fast, and they do not just want to be a country that only exports oil. So I think it works for us when we see that the Muslim world is now also kind of looking forward, and they are breaking those shackles of only being bound by ideological interests, and they are looking at strategic interests, economic interests, and that really works for us because we are interested in meaningful transactional relationships, which are also kind of supported by our strategic interests. So that works for us if the Muslim world is kind of moving on from that notion of only having allies based on their ideological and religious interests. बिल्कुल ठीक है. तो अच्छा ये बताइएगा कि जब इंडिया मिडल ईस्टर्न ममालिक या अरब वर्ल्ड के साथ बड़ा करीब होता है, जैसे ये एक नया एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म I2U2 का हिस्सा बनता है. Right. एट द सेम टाइम इंडिया के ऊपर, और ये सारी बातें मुस्लिम आबादी है, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया के ऊपर कुछ सवाल उठते हैं कि भाई इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, दे आर फेसिंग अ डिस्क्रिमिनेशन, या एक मेजॉरिटेरियन जस्टिस वहाँ पे उनको देखना पड़ता है. वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म है वहाँ पे, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट जब से आई है. और रिसेंटली एक दिस इज वन इंसिडेंट नूपुर शर्मा का, लेकिन इससे पहले वो एक इंसिडेंट की बेस पे तो सारी चीजें नहीं होती. वो जिसे कहते हैं ना, लावा बहुत देर से पक रहा होता है, एक इम्प्रेशन होता है, एक सोच होती है जो बात कर रही होती है. सो इंडिया कैसे रिकंसाइल करेगा कि जब मुस्लिम वर्ल्ड के करीब जाएगा, सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करता है, ईयू के साथ, उसके साथ यूएई के साथ अगर $100 बिलियन की ट्रेड अगले कुछ सालों में होती है, तो एंड देन ईरान के साथ एक नॉर्थ साउथ जो है वो डायलॉग, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर अभी उन्होंने शुरू किया है. ये बहुत बड़ा सारी बात है, एक बड़े लेवल पे इंडिया जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड को अप्रोच कर रहा है. लेकिन एट द सेम टाइम ये समझा जा रहा है कि जो मुसलमान है इंडिया के अंदर, दे आर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन, और वो एक पूरा नैरेटिव आपको पता, आई डोंट हैव टू टेल यू.
तो ये कैसे रिकनसाइल करेगा, क्योंकि वहां पे वो जो होस्ट पॉपुलेशन है वो इस पर बात करेंगे, वो भले सऊदीज हो, अमारातीज हो, कतरीज हो, टर्की हो, ईरान हो। इसमें जो रिसेंटली इस वाकई में कुछ एम्बेसडर्स को, इंडियन एम्बेसडर को बुलाया गया, कहीं को डिमार्च किया गया, बहुत कुछ किया गया। तो ये चीज आप कैसे समझती हैं कि ये जो एक्सटेंशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी है मिडल ईस्ट में जाना का, उसके फिर आपको बहुत सारी चीजें एट होम इंडिया को ठीक करने पड़ेंगी। डू यू थिंक ये नैरेटिव हैज एन वैल्यू, और इंडिया को इन चीजों को ये बैलेंस करना पड़ेगा? Right. See, when you talk of narrative, it is certainly not helping us in any way, but we are also aware of the fact that a narrative is being built this way, okay? We are completely aware of that. But fortunately, neither the countries that you're speaking of nor India, we make our moves according to what the public at large feels. Public at times can also be manipulated because they can also become martyrs of campaigns of disinformation on social media. See, you as a Pakistani may want to look at the growing notion or the alleged Islamophobia in India. You may be looking at it from a very Pakistani or a biased point of view because you yourself are a Muslim. In India, we are looking at this problem as a part of. See, I'm mincing no words. I'm just trying to be as candid as I can, right? I'm sorry if I end up offending you in any way, but I'm just trying to be honest, okay? We are looking at this phenomenon of, people wanting beheadings over a statement and getting out there on the roads with placards saying that beheading is the only punishment for uh, critiques of Prophet of Islam, Prophet Muhammad. We are looking at this mindset is as a part of that problematic mindset that is prevalent all over the world today. I mean, you can blame Hindutva or a fascist Modi for all you want, but the reality of the day is that it's not just India that is getting accused of Islamophobia. You see a lot of Islamophobia in the West also today. A number of people are feeling that they do not feel compatible with uh, uh, people who follow Muslim faith in their own countries or the people who are refugees from Muslim nations. Muslims across the world seem to face this compatibility issue. And I think in India also, a larger debate has started where the Indian Muslims are also kind of being urged to look at their larger interest and look beyond a transnational Muslim brotherhood, uh, instead of feeling for your land, because here we kind of want to propagate the idea of uh, ethnic nationalism, regional nationalism. Unfortunately, Muslims for some reason across the world, they have this illusion, or I don't know, whatever you want to call it, of having Muslim brotherhood. So they seem to they seem to not be able to see beyond that, which is becoming increasingly a concern in India. And talking about the harassment of Muslims, I would just let the statistics speak, because हिंदी if there हिंदी are. हिंदी में भी थोड़ी बात कर ओके, लेते जी हैं। जी, सॉरी सॉरी। सी, अगर मुसलमानों के साथ कुछ वाक़यात हुए हैं मॉब जस्टिस के, तो हिंदूज़ के साथ भी हुए हैं। इट्स जस्ट दैट मुस्लिम्स जो हैं, आई ऑलवेज़ से इट एंड आई विल अगेन से इट, दे आर रियली गुड एट गेटिंग देयर नैरेटिव आउट। जब भी हम दुनिया भर में कोई बॉम्ब ब्लास्ट भी देखते हैं, तो लार्जली एक एक्सपेक्टेशन होती है दैट मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड विल come and first denounce if something has been done in the name of Islam. But we see that there is a counter PR rather, propagating the idea that, okay, look, this has nothing to do with my religion. Fair enough, but at times you also have to come forward and use the kind of tactics that the Muslims seem to use when somebody commits some blasphemy against the people they revere.
वो बड़ा डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन होता है. व्हेन देयर इज अ टेरर अटैक, द रिएक्शन इज वेरी डिफरेंट. इट्स क्वाइट माइल्ड. It's more on the defensive side. But when somebody ends up debating Islam, which seems to be a norm in the free world to debate religion, that could be any religion. Uh, we see that the Muslims of the world have a disproportionate reaction. And coming to your question, see, our relationship with significant Muslim nations, it's based on, mutual interest and respect. uh, हमने देखा जब नुपुर शर्मा का जो वाकया हुआ, तो बहुत सारे अरब कंट्रीज थे जिन्होंने इंडिया को कंडेम भी किया. अब उसमें भी बहुत ज़्यादा पावर पॉलिटिक्स है, क्यों किया, क्यों नहीं किया. मुझसे ज़्यादा कहीं पाकिस्तानी एनालिस्ट हैं जो उसको और भी अच्छे से समझते हैं, राइट. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट द थिंग इज कि उसके बियॉन्ड क्या हुआ. इट्स मोर ऑफ ऑप्टिक्स, नरेंद्र मोदी उसके बाद आपको पता है वो उनका दौरा भी हुआ, and he received a warm welcome, right? So I don't think it will have any impact that way, because I think the Muslims understand Muslims better than all of us, right? So somebody sitting in Saudi would also understand the mindset of an Indian Muslim, and he would know what, to some extent, as to what is unfolding in India. And I think it also works in our favor, because of all the countries, Saudi Arabia has banned Tablighi Jamaat. Uh, I also hear from some credible sources in India that we also have pressure, again, from some significant Muslim nations only, that we should ban some Islamist groups which are in India, who pretend to be like, political parties or philanthropic groups. We also have pressure from the Muslim world itself that you have to get rid of these guys, because these countries seem to have realized कि हम एक दौर में इन लोगों को फंड करते थे. पाकिस्तान में भी भर भर के सऊदी अरेबिया ने फंडिंग की, जो आपके यहाँ पे दियोबंदी ग्रुप्स थे उनकी. बट आज अगर आप देखें तो सऊदी इज डिस्टेंसिंग इटसेल्फ from that image. They do not want to be identified as a power that they once used to take pride in. They don't want to identify with that kind of a image. एक ठीक है, एक मेरा जो लार्जर क्वेश्चन था वो बेसिकली यही था कि अगर आप मुस्लिम वर्ल्ड के इतने करीब हो रहे हैं तो ये क्वेश्चन होगा कि मुसलमानों के साथ जो इंटरनली इंडिया के साथ हो रहा है. लेकिन आपका कहना जो जो व्हाट आई अंडरस्टूड इज के भाई मुसलमान जो है वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं और वो भी तो I बड़े. think, मैं देखिए ना. मैं बात कर लूँ, मैं बात कर लूँ फिर आप जी 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 आई नेवर स्टॉप यू. मैं रोकता नहीं है, जो मर्जी बोले हैं. मैं जी जी जी, श्योर श्योर. मैंने अपनी जुबान बंद कर ली बिकॉज जी आई जी. बिलीव कि आपको बात करनी चाहिए. मैं इसमें ये सिर्फ ये कह रहा था कि आपका वो जो इंडिया का एक मौक़िफ़ है ना कि भाई वो देखें, जो बिहेडिंग हुई, मैं समझता हूँ कि जिसने भी, वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, दुनिया में कहीं भी जिसने भी कानून हाथ में लिया, वो कोई भी है, उसे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी है उसको सजा मिलनी चाहिए. और जिन्होंने इंडिया में वो जो वीडियोस बना बना के वो कर रहे हैं बेवकूफ, उनको तो सख्त सजाएं मिलनी चाहिए बिकॉज वो तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन गया ना. क्योंकि आप मुसलमान है, दैट डजंट मीन कि अगर किसी ने कोई बात की है तो आप उठ के वीडियो बना के लोगों को वायलेंस पे इंसाइट करें और कहीं जाके ये कर दें. मतलब दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, फॉरगेट इंडिया और पाकिस्तान जहां पे भी. तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है, जो भी काम होना चाहिए एज पर लॉ होना चाहिए. एक है कि आप बिहेडिंग को बात करें जिसको सजा मिलनी चाहिए, एक है कि पूरे का पूरा एक नैरेटिव है जेनोसाइड का मुसलमानों के बारे में. एंड यू कैन नॉट डाउन प्ले दिस. मैं इसको डाउन प्ले नहीं कर सकता, मैंने वो नहीं किया, ना मुझे उन चीजों का पता है, ना मैंने उसके ऊपर कोई लफ्ज आज तक लिखा है. लेकिन द वर्ल्ड हैज बीन राइटिंग, दुनिया बात कर रही है. आप बात करें इस्लामोफोबिया की, मुसलमान मसला है, बात हो रही है. देखिए ना वो सऊदी अरब जो है अब उसने भी तबलीगी जमात को बैन कर दिया. ये चीजें हैं. वहां पे क्या तब्दीलियां, हर मुल्क के अंदर अगर कोई मुसलमान कर रहे हैं तो उसको हर मुल्क या हर मुसलमान किसी दूसरे के गलत एक्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकता. दैट इज सो सिंपल. लेकिन ये जो चीज है, मैंने इसको लार्जली पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में पूछा था. अगर आप उसको डिफेंड करना शुरू करेंगी कि जो इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ हो रहा है वो भी नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूं, और मैं अगर पाकिस्तान में डिफेंड करना शुरू करूं कि यहाँ जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है मैं भी नहीं कर सकता. सो वन हैव टू व्हिच इज जस्टिफाई. मुझे ऐसे लगता है हमें जस्टिफाई करने की जरूरत है, रादर हम उन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है.
और ये जो ट्रांसनेशनल मुस्लिम ब्रदरहुड की आपने बात की, मेरा सारा पीएचडी का थीसिस इसके ऊपर, सो आई हैव रिटन एन एंटायर थीसिस ऑन इट्स एंड, और मैंने इंडिया के ऊपर भी जो जमात इस्लामी और जेयू की कनेक्शन है, तो मुझे नहीं लगता वो दैट एग्जिस्ट एनीवेयर, वो कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, वो कहीं पे अगर कोई एक जमात है थी, पुराने राब्ते थे, वो खत्म हो गए, बंद हो गए हैं, कोई कुछ भी नहीं है, और इसमें इंटरनेशनल प्रेशर था, ये वॉर एंड टेरर की बहुत कुछ था। सो मेरा जो लार्जली क्वेश्चन था वो ये नहीं था कि इंडिया के अंदर ये छोटी मोटी वो प्रॉब्लम नहीं था, मेरा लार्जल क्वेश्चन ये था कि अगर आप मुसलमान दुनिया के करीब हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुस्लिम दुनिया में एक इंप्रेशन है इंडिया के बारे में, दैट वाज लार्जर क्वेश्चन। ठीक है, आप उसको और सेंस में समझती हैं, दैट इज योर चॉइस, लेकिन लार्जर क्वेश्चन यही है, अभी भी यही है कि ऑब्वियसली कि वो जो रिसेंटली मुझे याद है कि बीजेपी जो है वो पूरी दुनिया के Can I respond? मैं आई एम जस्ट आस्किंग, जी जी। बीजेपी पूरी दुनिया के एम्बेसडर्स को बुला के अपना बीजेपी का इमेज ठीक कर रही थी कि भाई हम ऐसे नहीं है, हम ऐसे 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 हैं। सो दैट डजंट मीन कि बीजेपी जारी पर बहुत बड़ा काम कर रही है इंडिया के लिए, इंडिया का इमेज उठाया है, इकोनॉमी के लिए बड़ा काम किया है। सो वो लार्जर क्वेश्चन मेरा ख्याल है वही रह जाता है, वो इससे ये नहीं है कि आप दुनिया मुसलमानों के बारे में क्या कह रही है, यू आर गेटिंग क्लोजर टू इंडिया, टू द मुस्लिम वर्ल्ड, तो ये लोग क्वेश्चन तो करेंगे, बस ये दैट वाज माय ऑब्जर्वेशन एंड दैट वाज जी जी जी। You're kind of contradicting your own statements, okay? Let me point that out to you. सबसे पहले तो जब आप कहते हैं कि इंडिया जो है वो मुस्लिम ममालिक के करीब होता जा रहा है, जबकि वहाँ पे ये नोशन है कि इंडिया में जो मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती या तशद्दुद होता है, ठीक है? Coming to that point, I think then the joke is on the Muslim world. If they actually believe in the fact that there is indeed discrimination going on against Indian Muslims, and they still are getting, अभी हमको खींच के तो नहीं ला रहे ना चीमा साहब, they have a mutual interest. So I think that calls for a reflection on your side, if these people are indeed the custodians of the Muslim world or not. That calls for a reflection on your side. Secondly, I think Indian Muslims का genocide हो रहा है, ये भुट्टो ने भी कहा था. And this narrative has been going on in Pakistan to forever, and now there are some powers or vested interests that are trying to push this narrative globally. I think I would just rest my case with the fact that statistics talk for themselves. And जब किसी community का genocide होता है, तो their population doesn't increase by crores with every time a new census happens. And this narrative has been going on for a while. And आपने बहुत लंबा सवाल किया, मैं आपको शुरू में ही इसलिए कह रही थी कि मुझे बताने दीजिए कि मैं बेसिकली, आप जब कह रहे हैं ना कि वहाँ पे नैरेटिव तो ये है, अब एक बंदे ने बी हेडिंग कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस नैरेटिव को, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे थे ना कि आप उस नैरेटिव को बोलें कि नहीं, इंडिया में मुसलमानों के साथ कुछ नहीं हो रहा बिकॉज वन पर्सन कमिटेड टू बी हेडिंग. सो आई वांटेड टू लाइक एजुकेट यू अ लिटिल बेटर ऑन दैट, बिकॉज इंडिया में जो नैरेटिव मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत डरे हुए लोग हैं. पहले तो जब एक कम्युनिटी इतनी डरी हुई होती है, तो वो इस तरह से एक तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करते, उसके जो इंडिविजुअल्स भी होते हैं उस कम्युनिटी के फॉलोअर्स, की वो एक वीडियो बना के फिर ही इज इवन टॉकिंग अबाउट टेकिंग द सेम मीट क्लेवर, द नाइफ, to Narendra Modi's neck, and giving him the same kind of brutal death. I don't think it really resonates with that larger narrative that the Indian Muslims or their friends across the world are trying to create कि भाई हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, हम बहुत डरे हुए हैं. तो that जो actions है ना इंडियन मुस्लिम्स के, हमें स्टेट को या फिर एज अ हिंदू पर्सन हमें उसको काउंटर करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है. आई थिंक इंडियन स्टेट के क्रेडेंशियल्स स्पीक फॉर themselves. We were divided on the basis of religious lines back in 1947. We still retained our secular credentials. We had no pressure to do that. Look, it was a choice. It was a conscious choice that we made. Our leadership knew that the future is inclusive, and there's no point, being an ideological state. कोई मतलब नहीं है उसका. And I'm glad they saw through it. ठीक है, तो we have already chosen to be a secular nation, even though secular word itself, I have a few reservations with that because it has a negative connotation of having tolerance for other religions, whereas the Hindu people primarily, we are pluralistic people. We believe in the ideology of the world is one family.
वासुदेवम कुटुंबम इज व्हाट वी बिलीव इन, तो हमारे लिए तो ये मैटर ही नहीं करता, हम प्लूरलिस्टिक लोग हैं, ठीक है। बट वो जो नैरेटिव इंडियन मुस्लिम्स क्रिएट कर रहे हैं ना, ठीक है, उनके ग्रीवियांसेस होंगे, मैं नहीं कह रही हूँ उनके ग्रीवियांसेस नहीं होंगे, देयर इज नो smoke without fire, right? It's widely believed. But I also have a good idea of the fact that the Muslim world that you are primarily referring to, they also have a good idea of the fact that the reaction to these incidents are mostly disproportionate, and there are vested interests involved in it, and even the global powers who take interest in India's internal matters, they are driven by vote bank politics also. Recently, when US issued such a statement, India's response was the same, that, you should not let your vote bank politics or domestic interests drive your foreign policy. This is not how it works. Baki, I think we will judge ourselves by the commitments that we are making on a daily basis, and the engagements that we are getting into over the time. We will see if they are able to sustain and they are able to acquire credibility. जैसे ये I2U2 की भी बात हो रही है. We've come up with, specific points right now. We know we want to work on food security, clean energy, space, transport. But only time will tell if we deliver. But I don't think that the Muslim world, I'm not talking about Pakistan here. Even if you look at Afghanistan today, they don't seem to be having that kind of animosity towards India. Even if you look at Taliban, yeah, there are powers that have been trying to create a narrative that India is a anti-Muslim force, because these, you cannot help that mindset. Okay, if somebody thinks that, okay, for us to exist, India has to go because Hindus themselves are, kind of, their existence itself threatens our existence, then we cannot help that mindset. But I think overall, the Muslim world is trying to walk away from that notion. They do not want to identify with that kind of bigotry anymore. They want to move towards inclusivity, diversification, and look after their economic interests. And I think that's wonderful. बेसिकली ये जो बात मैं कह रहा था ना, इसमें इट्स नॉट अबाउट स्टेट लेवल पे क्या हो रहा है। स्टेट लेवल पे बेशक सारा मिडल ईस्ट अथॉरिटेरियन है। मैं जनरली वो बात कर रहा था कि अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, और ये जो आज की दुनिया है वो बिल्कुल और पैरामीटर में चल रही है। मैं बात कर रहा था जो मुस्लिम वर्ल्ड की पॉपुलेशन की जो सेंटिमेंट्स हैं उस हवाले से बात कर रहे थे। एनीहाउ मूविंग फॉरवर्ड, Right. कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, जो आप इस ज़ाहिर बात है इस सारी डिस्कशन के हवाले से है, और वो ये है कि आप क्या समझती हैं कि वेयर डू यू रेट कि इंडियन पावर ओवरऑल, आप इंडिया की पावर को कैसे रेट करती हैं इन द रीजन, लार्जली इन क्वाड, ये जो वेस्ट एशिया का क्वाड है, इसमें आप क्या समझ रहे हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ रहा है, और साथ साथ आप समझ रहे हैं कि इंडिया जो है वो अपने मिलिट्री फुटप्रिंट्स भी बढ़ाएगा, क्योंकि एक बात चल रही है कि इंडिया अपनी मिलिट्री एयर बेसिस जो है वो स्टैब्लिश कर रहा है सेंट्रल एशिया में, वहाँ उधर अफ्रीका में नीचे वो मडागास्कर आई थिंक समवेयर। सो ये आप कैसे समझती हैं कि ये जो इंडिया का एक्सपोनेंशियल ये जो रेट पिछले 10-15 साल में बढ़ा है, सो अगर वो पॉलिटिकल पावर बढ़ेगी तो आप समझ रहे हैं कि इंडिया मिलिटरली कैन टेक सर्टेन मेजर्स, बिकॉज जिस तरह पाकिस्तान में उन्होंने कहा जी कि हमने एक्सीडेंटली हमारे से साढ़े को मिसाइल छूट गया, हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, वो तो मिसाइल तो नहीं छूटे और तुमने जान के मारे है। सो आप उसको डू यू थिंक, और फिर इसमें मिसकैलकुलेशन भी हो सकती है, सो हाउ डू यू सी दैट? Well, if you're speaking specifically with regards to I2U2, I think for now we are good with what we are discussing. जो हमारे main जो concerns हैं, common concerns, जिसमें food security और mostly clean energy आता है. This was again, there were concerns that were driven by the COVID, post-COVID crisis, and then suddenly this war between Ukraine and Russia started. So realization seems to have dawned upon the entire world that life is extremely unpredictable. Even in these times when we think that, okay, having nuclear assets can act as a deterrent from getting into a conflict, but we did see that Russians did not think of it. They did not really pay attention to it. So that also is kind of being seen that, okay, even in the
in this time when most of the countries that are significant are nuclear armed, there are still possibilities of you getting into a conflict anytime. And then that conflict can like exist for so long. अभी रशिया और आप यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट देखिए कब से चल रहा है. Nobody would have thought that ये एक मतलब वाना भी नेटो एलाई है उसके साथ आप इतना लंबा कॉन्फ्लिक्ट को सस्टेन कर सकते हैं. तो सर्टनली हमारे जो interests हैं that are driven by our concerns which have kind of become stronger in the recent times after COVID crisis and this war. Uh, but I do understand because I see a number of Pakistani analysts are really interested in knowing if this can translate into a military alliance tomorrow. I do understand that will have some implications for the Pakistan military also because the Arab world has a lot of dependence on Pakistan military when it comes to their training and various other aspects because you Pakistan and the Arab world primarily they use like besides using the Chinese weapons they also use Western weapons provided by the US, UK, France. So there you do have a huge connection there, and if India ends up involving itself militarily in these regions, your interests are bound to get hurt. But I think we still have a long way to go. And as far as I understand in India, we really do not endorse military alliances. Even when it comes to Quad, um, India has always appreciated the fact that this alliance is flexible, and you basically get the opportunity to state as to what you want and what you don't want, because India also doesn't want the Quad to be seen as a second NATO. We have always taken an offense to that. Every time somebody tried to say, okay, Quad is the South Asian NATO, we did not want that idea to float around because we certainly do not want any kind of confrontations with anybody. We are just looking after our interests while somebody else looks after their own interests. And I think, let me mince no words here. I think with a country like China, which is your neighbor, they've had a history of uh, spreading human insecurity and not really kind of respecting the world order. They do not really they aren't really a rule based country, right? They have been accused of stealing technologies and reverse engineering karke kuch bhi apna bana dena hai, and not giving due credits. So I think the whole world is kind of looking at China right now as a threat in multiple ways because it shows very less accountability. Human insecurity में सबसे ऊपर उनका नाम आता है, and ऊपर से they also seem to have no regard for human rights, and plus uh, do not feel the need to even explain on that aspect. Every time they're accused of Uyghur genocide, the Turkey has reprimanded the Chinese on that. Even then, the Chinese have always they've also always kind of tried to downplay this, saying, okay, nothing like this is happening and we are not answerable to anybody. That's not how it works, right? India also gets accused by the US. Okay, we can get back to them, but we cannot say that, okay, we are just not answerable to anybody. When you're allies, you are a part of the international community, you have to take everybody along. So, to answer your question, I think the possibilities is very bleak of having a military alliance as of now. But yeah, if we do end up going that way, you certainly have a concern there. मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान को कंसर्न होना चाहिए. वी हैव अचीव्ड द स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी एंड वी नो हाउ टू डील इंडिया. हम अपनी वो कैलकुलेशन बिल्कुल सिक्योर करके बैठे हुए हैं. अदरवाइज अगर वो ना हमने की होती तो हम परेशान होते हैं. सो आई थिंक ऑन पाकिस्तानी पार्ट वी आर डन बिकॉज हमारा वो जो स्टेक था वो दैट वाज इंडिया, एंड अदर देन दैट हमें किसी से कोई मसला नहीं है. चाइना दोस्त है Right. एंड खिते में ऑल दैट. बट एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच सोनम महाजन फॉर giving a perspective on wide range of issues, particularly this presence of India in Middle East, or इसमें सारी बात है. There are so many angles to it. Is Israel, Muslim population, and growing interaction. Thank you very much for your time and for valuable comments. Thank You're you. welcome. Bye. Thank you. Bye.